Hello everyone. In previous video we had learned about respect or love our land, and if we want to respect our land we should respect to our national flag. And we had learned about there our national flag is tricolor, and three colors are there in our national flag, that is saffron, white and green. And we had learned about each color, each band shows the different values of the color. And now today we will see about the question answer of this chapter, whatever we had done in previous video. So first question, that is, what does the saffron band stands for? Do you remember? सेफ्रॉन बैंड यानी कि सबसे पहला जो कलर है नेशनल फ्लैग का, तो वो किस बात का वो प्रतीक है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर. आवर नेशनल फ्लैग is important because it represents all the value that India stands for. And in that national flag, the first color, that is saffron, the saffron band of the national flag stands for courage and sacrifice. And I told all of you about the sacrifice. What is the meaning of sacrifice? Sacrifice means to live for such thing for others. किसी के लिए अपनी चीजें का बलिदान देना, that is called sacrifice. Now second one, what does the white band stands for? The white band of national flag stands for truth, honesty and peace. जो white band है वो सत्यवादी, ऑनेस्टी एंड पीस यानी कि शांति प्रिय होने का संकेत है, प्रतीक है. What does the green band stands for? The green band of the national flag stands for growth and prosperity. It shows that our country is full of wonderful things. This green band shows us happiness in our country and full of wonderful things. Then, what does the wheel stand for? There is a wheel in the middle of the flag in the white band. What does it stands for? The blue wheel on the white band of the national flag stands for right conduct and constant growth. हमेशा हमारे देश का विकास होता रहता है, and it goes every time in a right way only. वो सही तरीके से ही सही दिशा में जा रहा है. So these are the answer for this question, and now we will see some more things about our national flag. Let's understand. The national flag is hoisted यानी कि लहराया जाता है. Raised using a rope यानी कि एक ऐसे खंबे की हेल्प से उसको लहराया जाता है, फरकाया जाता है. All over India, in schools, colleges, houses and offices on Independence Day and Republic Day. It is important to stand up and show respect for the flag when it is hoisted. जब भी ये नेशनल फ्लैग लहराया जाता है, whenever it is hoisted, we should stand up and give respect for the flag when it is hoisted. Long ago, a country called
ग्रेट ब्रिटेन रूल्ड ओवर इंडिया। कई साल पहले ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारे इंडिया पे, हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। Many Indians came together to make our country free. India became free from British rule after a long struggle for freedom. So whenever the Britishers came to India and after they ruled over India and they were not ready to leave India, so that so many Indians came together to make our country free. बहुत सारे लोगों ने अपना देश वापस लेने के लिए बहुत ही स्ट्रगल की है और काफी समय की लंबी स्ट्रगल के बाद ब्रिटिशर्स ने ये हिंदुस्तान, ये इंडिया छोड़ा है। कैन यू इमेजिन that wherever you are living now in that house, if somebody enters to your house and they will tell you that leave your house and we will live in your house, आपको कैसा लगेगा कि आपके घर में कोई भी बाहर का आदमी आके ऐसा बोलेगा कि आप सब लोग बाहर निकल जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, पर मैं अब आपके घर में रहूंगा, आपको ये आपका घर छोड़ के चले जाना है। तो क्या आपको वो पसंद आएगा? इज इट गुड फॉर यू? क्या आपको वो कभी अच्छा लगेगा? नो, आप लोगों को तो आपका आपका घर छोड़ना कभी अच्छा नहीं लगता। द सेम वे सो मेनी पीपल came together to make our country free। और इसीलिए बहुत सारे हिंदुस्तानी लोगों ने मिलके ब्रिटिशर्स के सामने बहुत सारी फाइटिंग की, बहुत सारी लड़ाइयाँ की, एंड देन आफ्टर वी बिकम फ्री आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑल्सो। Finally, when the British left India, our brave leaders hoisted the national flag on a tall pole and saluted। और बहुत सारी लड़ाइयाँ और फाइटिंग के बाद जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ा, तब जो हमारे ब्रेव लीडर्स थे उन सब लोगों ने मिलके ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको एक बड़े से लंबे से पोल पे लहराया और फिर उसको सैल्यूट किया। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू all the people at that time they fight against the Britishers, and India become free just because of them only. They had struggled a lot for our country and they make the country free from Britishers. So after a long struggle from for freedom. So this is the most important thing that you have to remember. We should always give respect to our national flag. It shows the respect for our nation. So whenever it is hoisted, we should stand up and respect to the flag. After watching the video, all of you have to read the page, that is page number 47, and continue reading, and we will meet in the next video with some more information. Okay, till then, goodbye and have a nice day.